अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हो बेटा, हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइंस की जो पहला जो टॉपिक है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ एन एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वी यूज m इज इक्वल टू tan थीटा. This is slope of line. Or simply, if x1 comma y1 are two vertices or 2 points in a plane, x2 comma y2, 2 points on a plane, then the slope of a line joining by these 2 points and b, it is always m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये भी स्लोप की फार्मूला बेटा. तो स्लोप पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया कि मैंने आपको बताया अगर m1 किसी लाइन का स्लोप है, m2 किसी दूसरी लाइन का स्लोप है, तो when m1 is equal to m2 means when the slopes are equal means the lines are parallel. And second, if m1 into m2 is equal to -1, that means if the product of slopes of two lines is equal to -1, then we can see the lines are perpendicular. अब इन कंडीशंस पे बेटा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज without using Pythagoras theorem, show that the points are 4, 4, 3, 5, -1, -1. These are the 3 points you have to show. Without using the Pythagoras theorem, you have to show these 3 points are the vertices of a right angle triangle. It is A, it is B, it is C. ठीक है, means we have to show these 3 points are the vertices of a right angle triangle. तो बेटा we will try to find the slope of AB and slope of BC. Slope of AB and slope of BC. Because if I write, suppose ये 3 vertices है, it is A, B and C. A is 4, 4 for example, B is 3, 5 and C is -1, -1. ठीक है. Without using the Pythagoras theorem, you have to show the points are these three points are the vertices of a right angle triangle. So in order to find the slope of, in order to show these 3 points are the vertices, these 3 points are the vertices of a right angle triangle, we must show slope of AB into slope of BC should be equal to -1. So let us check the slope of AB. What is slope of AB? Slope of AB, let it be m1, and this m1 is equal to y2 minus y1, that is 5 minus 4, that is 1 divided by 3 minus 4, that is -1, which is equal to -1. So m1 is slope of this -1. Clear? Now slope of BC, we'll check the slope of BC. Slope of BC is -1 minus 5, that is -6, -1 minus 5. Sorry, it is slope of BC. ठीक है. So slope of BC is 3/2. And what is the slope of BC? Slope of BC, it is -1 minus 5, that is -6 divided by -1 minus, that is -4, minus cancel, that is 6/4, and this is 3/2. What is the slope of AC? Slope of AC. So slope of AC जब आप निकालोगे बेटा, you will find -1 minus 4, that is -5 divided by -1 minus 4, that is -5, that is equal to 5. So if you check here, it is, let it be m2, let it be m3. If you check the slope of AB and slope of this AC, 5/5, that is 5/5, which is equal to 1. If you check this m1 into m3, this is equal to -1. So मैंने यहाँ पे वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बताया दिया था. Let it be some BC, let it be C, and let it be ABC. It is a right angle, it is a triangle, Don't you just consider it. It is a triangle.
ट्रायंगल, यू जस्ट कंसिडर इट इज अ ट्रायंगल। एंड नाउ अगर आपके पास एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो बेटा अगर 2 साइड्स, एक साइड का स्लोप आपने निकाला वो एक सेगमेंट होगा, दूसरे सेगमेंट का भी स्लोप निकाला, तीसरे का भी, अगर इन तीनों सेगमेंटों में से 2 परपेंडिकुलर हुए, 2 सेगमेंट्स परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर एंड बेस, मीन्स व्हेन आई से हियर स्लोप ऑफ m1 into slope of m3 is equal to -1, so I can say here the slope of this line, I can say the slope of this line AB into slope of line AC, line segment AC is equal to -1, so that we can say they are perpendicular to each other, therefore the given points are the vertices of a right angle triangle. So एक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ a line which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree। आपको करना क्या है बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन, you have to find slope of line such that which makes slope of a line which makes an angle of 30 degree with positive direction with x axis. So this is the 2-dimensional plan here। ठीक है, अब कौन सी लाइन है बेटा, लाइन है, एक लाइन है, let it be line this, and this line you have to find the slope of this line, but this line makes an angle of 30 degree with the x axis। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है, इट इज़ 90 डिग्री, सो 90 + 30 कितना आया, दैट इज़ 120 डिग्रीज। ठीक है, सो थीटा इज़ हियर, इट इज़ नॉट ओनली 30 डिग्रीज बट इट इज़ theta, if I write, it is the tangent of an angle which the line makes with the x axis in positive direction। तो बेटा जब आपको इस लाइन, इट इज़ origin O, it is A, अगर आपको OA का स्लोप निकालना है, so you have to simply find the tangent of the angle, this angle which the line OA makes with the x axis in positive direction। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, टोटल जो एंगल होगा वो होगा 90 + 30, दैट इज़ 120 डिग्रीज। सो थीटा इज़ 120 डिग्रीज। तो स्लोप क्या आएगा बेटा, हैज़ यू नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। सो स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्रीज। तो m क्या आ सकता है बेटा, you just write tan of 120 degrees can be written as it is pi means 108, pi means pi 180 degree minus pi by 3, it is tan of pi minus pi by 3। और सिंपली अगर आप पाई नहीं समझ रहे बेटा, तो पाई क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, सो 180 डिवाइड बाई 180 माइनस 60 डिग्रीज 120 डिग्रीज। तो यहाँ से आप क्वाड्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं, पाई पे को फंक्शन नहीं होती है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई माइनस इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड इट इज़ पाई, इस सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली tan is negative, only sin and reciprocal of sin is positive, and the remaining are negatives। So m is here minus tan of pi by 3, that is m is equal to minus tan of 60 degree। So minus tan of 60 degree is equal to m is equal to minus tan of 60 degree, that is minus √3, this √3 minus √3, so this is slope is here, m is equal to slope क्या है, minus √3, this is the slope of the line। क्लियर। एक और क्वेश्चन है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल शो यू दिस क्वेश्चन, तो बेटा question is find the value of x for which the tangent of angle, find the value of x for which the points x, it is question number 8, question क्या है, find the value of x for which x comma -1
second 2 comma 1, and third point is 4 comma 5. They are collinear. So points are collinear. You have to find the values of x. When the points are collinear means they lie on the same line. So we can say when they lie on the same line, I can just write it as these 3 points. Let it be A, B, C. If you can write this, if the points A, B, C as, you can write them as A, B and C. These are the 3 points A, B and C. You have to find the value of x, and the points are collinear. When the points are collinear means they lie on the same line. It is point sum A, B and point C. When they are collinear, so we can say the slope of AB is equal to slope of BC. Slope of AB is equal to the slope of BC. ठीक है? What is slope of AB? Slope of AB will be 1 minus 1, that is 2 divided by 2 minus x. 2 divided by 2 minus x is equal to 5 minus 1, 4 divided by 4 minus 2, that is 2. That is 2 divided by 2 minus x is equal to 2. ठीक है? So 2 to cancel, that is 1 divided by 2 minus x is equal to 1 divided by 2 minus x is equal to 1. That is 1 is equal to 2 minus x. So x is equal to 2. So value of x is equal to 2.